Okay, so what we are going to do is we are going to find this equivalent load. ठीक है जी. अच्छा, equivalent load हम कैसे मालूम करते हैं? देखें यहाँ पे this is a table that says that is table 11-1 in your book. So it gives, again, it gives representative values in a manner common to many catalogs. If you look at different catalogs, so this is the way that they will give you information about a bearing, and that information will be कि आपका जो FA divided by the static load rating which is C0, एक ये फैक्टर होगा. ठीक है जी. Then if you remember, अभी जो हमने कहा कि the trend is like this. ठीक है जी. तो ये E की जो वैल्यू है ना, ये E, this E is also listed in this table. ठीक है जी. तो either you use I is equal to 1 or I is equal to 2. This means you are either on this side of E or you are on this side of E. So it is equal to or on this side of E or greater than E. तो ये दो हमारे पास सिनेरियो हो सकते हैं. If I is equal to 1, तो फिर आप क्या करेंगे? मतलब if the axial load is in a smaller quantity, तो फिर आप ये x1 और y1 की वैल्यूज इस्तेमाल करेंगे. देखिए I की जगह if I put 1, तो this will become I x1 y1. ठीक है जी. If I use x2 y2, तो then this will become x2 and this will become y2. तो आप क्या करेंगे? इधर टेबल से वैल्यूज लेंगे, right? Instead of x1, you will put this x1 over here. You will put y1 over here. तो ये टर्म 0, इसमें अगर आप देखें तो ये 0 पुट करेंगे तो f is equal to x VFR. वही हमारे पास वैल्यू आ रही है जो हमने इक्वेशन निकाला था, right? लेकिन if it is x2 y2, then you will use these two values. ठीक है जी, instead of x and y. तो xi and yi की जगह आप ये वैल्यूज इस्तेमाल करेंगे. So we are able to find out our fe. ठीक है जी. Now let's look at this. Again, this is how the table is. ठीक है जी, 11-1. Now let's look at this. मैं एक यहाँ पे I'm going to share another screen with you, and that is this one. ठीक है जी. यहाँ पे आप देखें तो we are going to look at two problems. ठीक है जी. Now this is one problem that says कि हमारे पास and this is from your book. This is an example in your book which is 11-3, I guess. ठीक है जी. It says that the design load of a ball bearing is 143 pound force. Now please tell me what should be the symbol for this. इसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूं? Please guide me. इसको मैं क्या कहूं? It says design load. What is design load? हमने क्या सिंबल इस्तेमाल किया था? देखिए FD. वेरी गुड. ठीक है जी. तो चलिए फिलहाल मैं इसको आप कह रहे हैं तो इसको मैं FD कह देता हूं. ठीक है जी. एंड एन एप्लीकेशन फैक्टर अगर आपको याद हो तो हमने यही कहा था. देखिए आपको मतलब कोई आराम से एक चीज पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, कोई एक इम्पैक्ट से फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो दोज आर टू डिफरेंट एप्लीकेशन फैक्टर्स. तो इसको हमने AF कहा था, याद है आपको? ठीक है जी. तो दिस इज आवर AF. ठीक है जी. इज appropriate. Now the speed of the shaft is 300 revolutions per minute. तो उसने हमें कितना स्पीड भी दे दिया? n. ठीक है जी, ये हमारा n है. And the life to be 30 किलो आवर्स. ठीक है जी. तो ये हमें उसने लाइफ दे दी इन किलो आवर्स. तो इसको हम ये L, इस L से डिनोट कर देते हैं. ठीक है जी. With a reliability of 99.99%. ठीक है जी. तो इसने हमें R भी दे दिया. ठीक है जी. Now, what is the C10 catalog entry to be sought? वो कहता है कि कौन सी एंट्री पे मैं देखूं कैटलॉग में C10 लोड रेटिंग पे के और exceed when searching for a deep groove bearing in a manufacturer's catalog on the basis of 10 to the 6 revolutions. देखिए ये 10 to the 6 revolutions जो है ना, ये मैन्युफैक्चरर की जो लाइफ है ना वो वाली L10 बेसिकली. तो ये आपकी L10 है. हाँ, ये दिस इज और L10. ठीक है जी. चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L.
10 and this L10 is equal to, or अमूमन it will be 10 to the power 6 for most of the manufacturers. ठीक है जी. Now he says the variable parameters, जो हमने, अगर आपको याद हो तो अभी हमने कहा था variable parameter x naught, theta minus theta no, theta minus x naught और b ये skewness parameter ये इतने हैं. We know the formula, it is not a big deal. एक तो हम देखिए हमने कहा था कि हम क्या करते हैं कि instead of writing LD and LR हम इसको XD में एक्सप्रेस करते हैं because it will give us this many times life of L10. देखिए तो हम क्या करेंगे, since this is given in hours, ये हमें hours में दिया गया है ना, तो 60 multiplied by LD जो डिजाइन, ठीक है जी, multiplied by ND, तो ये हमें क्या देगा, LD दे देगा, डिवाइडेड बाय L10. L10 हमारा है 10 to the power 6. ठीक है जी, तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे 540 टाइम्स ऑफ L10 है. समझ आ गई बात, समझ आ गई बात कि हमारी डिजाइन लाइफ कितनी है, L10 से कितनी कम है, कितनी ज्यादा है, 540 गुना, 540 गुना है. ठीक है जी, तो फॉर इस तरह की लाइफ के लिए फॉर अ बॉल बेयरिंग हमारे पास ऑलरेडी वी नो कि ए जो है दैट इज 3. ठीक है जी, ए 3 था, और रोलर बेयरिंग के लिए कितना है, ताकि आपको याद रहे, ये ए रोलर बेयरिंग के लिए कितना था, याद करें, इट वाज 10/3. हाँ, रोलर के लिए 10/3 था, और हमारे बॉल बेयरिंग के लिए इट इज 3. नाउ तो इक्वेशन तो वी ऑलरेडी नो 11-7 की 11-7 क्या था, C10 इज इक्वल टू AF. ठीक है जी, AF कितना है 1.2. ठीक है जी, टाइम्स व्हाट इज दिस इज FD, और फिर आपके पास क्या था, XD ओवर वही फिर वेबल पैरामीटर्स थे, x नॉट प्लस थीटा माइनस x नॉट 1 माइनस r टू द पावर 1 ओवर b, तो b हमारा इतना है. तो नाउ ये हमारी कैटलॉग एंट्री होगी. इट इज एज सिंपल एज दैट कि हम बियरिंग की सिलेक्शन अब क्या करेंगे कि हम कैटलॉग में जाएंगे और इस कैटलॉग में जाके इस लोड रेटिंग के लिए ये देखेंगे कि कौन सा बियरिंग होना चाहिए. ठीक है जी, वेरी इजी. अच्छा, अब मसला ये है, ये FD तो बड़ी आसानी से हमें मिल गया था ना, ये तो उसने बता दिया हमें कि ये FD है आपका. ठीक है जी. अच्छा, लेकिन केसेस ऐसे होंगे कि जिसमें FD हमारे पास ऐसे नहीं होगा. फॉर एग्जांपल हम इस केस की बात करते हैं जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा ना, F इक्विवेलेंट का, तो वो FD हमारे पास आया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास FD उस तरह नहीं है जिस तरह हमें मतलब वहां पे मिला था. अब हम इस FD को कैलकुलेट करेंगे. कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें, लेट्स सी कि ये हमें क्या बता रहा है. He says that an SKF 62 10 angular contact ball bearing. SKF is a bearing manufacturer and I would advise you please go to this website. हाँ, वहां पे आप बहुत सारे bearings देखेंगे. You will be very happy. आपको मेला मिलेगा bearings का. ठीक है जी, they are bearing manufacturers. अच्छा, वो कहता है कि ये 6210 is this, मतलब जो stand part उसका नंबर है. Angular contact ball bearing has an axial load. अच्छा, FA कितना है, FA is equal to 400 pound force. ठीक है जी, 400 pound force. ठीक है जी, and a radial load of 500. तो हमारे पास FR भी है, and that FR is कितना 500. ठीक है जी, तो ये सॉरी मेरा ये, ठीक है जी, एनीवेज आई विल मार्क इट हियर. ठीक है जी, FR हमारा ये है. तो वो कहता है कि विद द आउटर रिंग स्टेशनरी. व्हाट डज दिस मीन, आउटर रिंग जब स्टेशनरी हो तो V इज इक्वल टू व्हाट, V किस चीज के बराबर होगा, इनर रिंग के लिए क्या था, हाँ 1. ठीक है जी, तो दिस इज 1. ठीक है जी. अच्छा, नाउ द बेसिक स्टैटिक लोड रेटिंग इज 4450 पाउंड फोर्स. तो वो हमें C0 भी दे रहा है, C0 ये भी उसने दे दिया.
ठीक है जी. अच्छा, एंड द बेसिक लोड रेटिंग C10 भी उसने दे दिया, C10 इतना है. सो ही सेज एस्टिमेट L10 लाइफ एट द स्पीड ऑफ 720 रिवॉल्यूशंस पर मिनट. तो उसने हमें n भी दे दिया. अच्छा जी, ये बस हमें पता है v is equal to 1. नाउ इन द टेबल अगर हम यहाँ पे देखें तो टेबल में हमारे पास सबसे पहले एंट्री क्या थी, एफ ए ओवर सी नॉट, ये वैल्यू थी ना, एफ ए ओवर सी नॉट. तो इससे हम एफ ए ओवर सी नॉट कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये एफ ए ओवर सी नॉट हमारे पास क्या होगा 400, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय कितना, सी नॉट इज सी नॉट 450. तो ये हमने किया, 450. ये हमारे पास नंबर आ गया. ठीक है जी. अच्छा, ये वैल्यू क्या है, ये एफ ए और सी नॉट की वैल्यू है. प्लीज रिमेंबर दिस वैल्यू. हाँ, अच्छा, इस वैल्यू को अगर हम रिमेंबर करते हैं एंड लेट्स सी कि ये वैल्यू हमारे पास कहाँ आती है, 0.99. हाँ, तो हम देखते हैं कि ये वैल्यू कहाँ आ रही है. लेट्स सी, ये हमारे पास, अच्छा प्लीज टेल मी वेयर इज 0.99 एफ ए और सी नॉट, कम जाएगी भाई. देखिए, वी लुक इन दिस कॉलम का ना, we will look in this column. This is my FA over C naught. अच्छा बताएं कहाँ पे आएगा, 0.08 और 0.1 के दरमियान में. वेरी गुड, वेरी गुड. 0.08 यहाँ पे और 0.1 के दरमियान. और इसके दरमियान कहीं पे आएगा हमारे पास. तो हमारे पास एक टेबल में वो वैल्यू नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, हम इसको इंटरपोलेट कर सकते हैं इनके दरमियान ये वैल्यू. ठीक है जी, तो हम इंटरपोलेट कर अच्छा. लेंगे. ठीक है जी, क्या इंटरपोलेट करेंगे, हमें असल में इस वैल्यू के, मतलब इस वैल्यू के बराबर जो हमारा 0.99 है ना यहाँ पे, उसके बराबर हम ई देखना चाहते हैं कि ई क्या है. ठीक है जी, तो वो ई हम कैलकुलेट देखेंगे. अगर ई की वैल्यू हमारे पास एक दफा आ जाए ना, तो देन वी विल सी. हम फिर क्या करेंगे कि एफ ए और वी एफ आर कैलकुलेट करेंगे. एफ ए और वी एफ आर हम कैलकुलेट करेंगे. अगर ई की वैल्यू उससे कम हो तो हम फिर x1 y1 इस्तेमाल करेंगे, अगर ज्यादा हो तो फिर x2 y2 इस्तेमाल करेंगे. तो लेट्स गो देयर. हम दोबारा जाते हैं और हम वो वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने इंटरपोलेशन की हुई है. देखिए 0.8 और 0.11 के दरमियान हमने इंटरपोलेशन किया, तो ई की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, 0.285. ठीक है जी, ये वैल्यू याद रखें, क्या निकल आई, 0.825. ठीक है जी. एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? नो. अच्छा, चले हम आगे चलते हैं. हम ये वैल्यू अब लेते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, एफ ए ओवर वी एफ आर. तो व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस कम्स आउट टू बी 0.8 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0.285. अगर ग्रेटर हो तो अब क्या करेंगे, हम कौन सी वैल्यूज, आई की वैल्यू क्या होगी, I2 लेंगे. तो हम X2 और Y2 इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे पास इक्विवेलेंट लोड आ जाए. तो ये वो फार्मूला है, इसमें है X2 Y2 हम इस्तेमाल करेंगे. सिमिलरली आप Y2 के लिए देखें, X की वैल्यू वहां पे अगर आप देखें ना, तो X की वैल्यू हम उस टेबल में देखते हैं. चले उस टेबल में अगर हम X की वैल्यू देखें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, सदा 0.11 नदल चिराजी का ना, ये देखें x2 की वैल्यू, ये सारे 0.56 है ना, तो वो x की वैल्यू के लिए इंटरपोलेशन की जरूरत नहीं है, दैट विल स्टिल बी 0.56. लेकिन y की वैल्यू के लिए इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी, तो वी विल डू दैट, हम उसके लिए इंटरपोलेशन कर लेंगे. तो उसके लिए इफ वी डू इंटरपोलेशन फॉर दैट और y2 वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.527. ठीक है जी, let's use that value. So if we use that value, our FE over is equal to 890 pound force. Now what is this FE, what is this FE, equivalent radial load. and what should this be, FD है ना ये basically, आपका डिजाइन लोड ये हो गया ना अब. तो this is my FD now. हाँ, हम इस पे डिजाइन करेंगे.
تو ایف ڈی از اکول ٹو ایف ای. تو لیٹس ڈو دیٹ. ہم اس پہ تو لیٹس پٹ دا ویلیو ناؤ ہیئر ان اینڈ وی کین فائنڈ آر L10 جو ہمیں وہ کہہ رہا تھا کہ کتنے گھنٹے اس کی لائف بنے گی. ٹھیک ہے جی. تو دیٹ از 16,150 hours. Any question? اچھا جی, اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو now we know how to find out equivalent load. ٹھیک ہے جی, ایک مسئلہ تو حل ہو گیا. ٹھیک ہے جی, تو ایک مسئلہ ہمارا حل ہو گیا کہ ہم equivalent load معلوم کر سکتے ہیں. اچھا جی, again I am asking any question? No. ٹھیک ہے جی. اچھا, اگر کوشچن نہیں ہے تو دیکھیں یہ ایک this table 11-4 this gives you the life recommendations for different applications. For example, instruments میں یا apparatus for infrequent use اگر آپ استعمال کرتے تو your bearing life should be 0.5 kilo hours. ٹھیک ہے جی, مطلب 500 hours. ایئرکرافٹ انجنز میں 0.5 سے لے کے 2 kilo hours تک. تو for different machines they have given you different values of these. تو even آپ کے پاس جو ابھی ہمیں وہ بتا رہا تھا نا کہ اتنی لائف ہے, تو even if you don't know you come to this table کہ آپ کا اپلیکیشن کون سا ہے تو بیئرنگ کی لائف کتنی ہونی چاہیے, you just select a value from this. ہاں ٹھیک ہے جی. تو اس سے آپ بیئرنگ کی لائف کی مطلب this will be your LD. ہاں یہ کیا ہوگا LD. This is your design life. یہاں اس ٹیبل سے آپ لے سکتے ہیں. Right now let's go a little further. یہ آپ کا وہ AF جو اس نے ہمیں ویلیو دی تھی, لیکن we also have this table from which we can get a value. For example, precision gearing ہے تو you can use up to 1 یا 1.1. machinery with no impact again اس کے لیے 1 سے 1.2 تک, لیکن machinery جس میں impacts ہو, shocks ہو تو you will use 1.2 سے 1.5. اگر بہت moderate shocks ہو, light shocks کے لیے وہ, لیکن اگر moderate shocks ہو تو 1.5 سے لے کے 3.0 تک آپ استعمال کر سکتے ہیں AF کی ویلیو. تو you can also get the A value of AF from this table if they have not given it to you in the problem. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ایک اور فیز میں ہم داخل ہوتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ دیکھیں تھوڑا سا ہم چیزوں کو مشکل بناتے جا رہے ہیں. دیکھیں پہلے ہم کہہ رہے تھے ہم FR کی بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی, صحیح تھا. اچھا, تو یہ FR ہمارا کیا تھا, بیسیکلی ہم کہہ رہے تھے کہ چلو ہمارا ایکزیل لوڈ نہیں ہے, تو دس واز اور ایکویولنٹ لوڈ بیسیکلی ویسے ہوگا نا, اور یہ ہمارا FD تھا. رائٹ, آر وی رائٹ؟ پلیز آنسر. یس سر. اچھا, پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس FR بھی ہے, لیکن FR کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہے, FA بھی ہے, اور ان دونوں کو ہم ملا کے ان سے ہم کیا بنائیں گے, F ایکویولنٹ بنائیں گے, اور وہ F ایکویولنٹ ہمارا FD ہوگا. ٹھیک ہے جی, ابھی تک ہم یہ کہہ رہے ہیں نا. اچھا, اب ہم ایک اور چیز کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے, یہ تو ان چیزوں کے لیے جہاں پہ آپ کا لوڈ جو ہے نا وہ FR اور FA چینج نہ ہوتا ہو. اگر ایسا اپلیکیشن ہے جس میں آپ کا FA بھی چینج ہو رہا ہے اور FR بھی like let's say it does not remain the same for a longer time, بلکہ وہ وقت کے ساتھ وہ اس میں ویریشن آتی ہے, تو پھر ہم تو کوئی بات نہیں ہے, اس کے لیے ہم FE معلوم کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, تو وہ کیسے ہم معلوم کریں گے؟ دیکھیں ایک تو آپ what you should remember is that there is this لینئر ڈیمیج ہائپوتھیسس ہے, اور وہ یہ ہے لینئر ڈیمیج ہائپوتھیسس آپ کو کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس F ٹو دا پاور A ہونا, لوڈ ٹو دا پاور A اینڈ لائف ہو آپ کے پاس, ٹھیک ہے جی, تو ان کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہے کہ F ٹو دا پاور A L از اکول ٹو کانسٹنٹ. ٹھیک ہے جی,
Now, تو اگر آپ یہ پلاٹ کریں تو وہ کہتا ہے کہ یہ کانسٹنٹ ہے. اب یہ ہے کیا اصل میں؟ یہ ہے یہ کہ اگر ہم ڈیمیج کو میجر کریں نا تو ڈیمیج یہی کاز کرتا ہے کہ ڈی اگر ڈیمیج ہمارے پاس ہونا تو ڈی ڈیمیج کیا ہوتا ہے کہ اٹ ول بی ایف ٹو دا پاور اے ٹائمز ایل. ٹھیک ہے جی. اور وہ آپ کے پاس یہ ڈیمیج اگر کاز ہوتا ہو تو دیکھیں اگر آپ کے پاس فورس جو ہے وہ چینج ہوتا ہے, if it is changing تو what will happen کہ وہ small ڈیمیج جو ہے نا اس کو اگر ہم اکٹھا کریں تو وہ small ڈیمیج جو ہے چھوٹا چھوٹا بن کے it will make the whole damage. ٹھیک ہے جی. تو yes we know کہ ایف اے ٹائمز ایل f to the power a times l is equal to constant یا it is equal to k. اور یہ f a کیا ہے بیسیکلی؟ f ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ c10 times l is equal to constant. ٹھیک ہے جی. Now let's go and extend this further a little bit. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم extend کرتے ہیں and how are we going to do that کہ ہم کہتے ہیں کہ let's say ہمارے پاس ایسا سینیریو ہے. کیسا سینیریو؟ دیکھیں انجن میں آپ دیکھیں انجن میں سکشن سٹروک ہوتا ہے, کمپریشن سٹروک ہوتا ہے, ایگزاسٹ سٹروک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پاور سٹروک ہوتا ہے. تو کیا پاور سٹروک جب پسٹن کے ساتھ جو مطلب آپ نے کنیکٹنگ راڈ اور جو چیزیں لگائی اس میں بیئرنگ ہے, لیٹ سے کہیں پہ بیئرنگ ہے, کیا انجن میں سارے پارٹس جو ہیں اس پہ the load at the time of power stroke is it the same as the load which is on those bearings at the time of suction stroke؟ وہ برابر ہوتا ہے؟ برابر ہی نہیں برابر. ٹھیک ہے جی. تو بہت آسان بات ہے, ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اس طرح ہے تو پھر دیکھیں لیٹ سے ہم ایک کیس لے لیتے ہیں اور وہ کیس یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ for some time let's say if this is f to the power a and یہ ہمارا l ہے, ٹائم ڈیوریشن لائف جتنی, for some time ہمارا فورس جو ہے نا وہ f1 رہتا ہے, f1 رائٹ. تو اس f1 میں ہمارے پاس ایکسیل لوڈ بھی ہے اور ریڈیل لوڈ بھی ہے, تو اس کا ایکویولنٹ لوڈ کیا ہوگا؟ fe1 ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو fe1 ہوگا. Now we have another load which is مطلب let's say power stroke. تو power stroke میں ہمارے پاس لوڈ زیادہ ہو گیا and that remains the same for some time. 2 سیکنڈ کے لیے, 3 سیکنڈ کے, 4 منٹ کے لیے کسی مشین میں, اس میں بھی ہمارے پاس ریڈیل لوڈ بھی ہے. دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں نا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ کا ایکسیل لوڈ کتنا ہے؟ FA1. آپ کا ریڈیل لوڈ کتنا ہے؟ FR1. ان کا ایکویولنٹ لوڈ کتنا ہے؟ FE1. ہاں اسی طرح یہاں پہ آپ کا ریڈیل لوڈ کتنا ہے؟ FR2 اس پورشن میں. یہاں پہ آپ کے پاس ریڈیل لوڈ کتنا ہے؟ FR2. ایکسیل لوڈ کتنا ہے؟ FA2. ایکویولنٹ لوڈ کیا ہوگا؟ FE2. ٹھیک ہے جی. تو سملرلی I would say کہ تھرڈ ہمارے پاس ایک اور سیگمنٹ ہے جس میں ہمارے پاس لوڈ اتنا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 ڈفرنٹ لوڈز ہم لے رہے ہیں اور پھر یہی سائیکل جو ہے دیٹ از ریپیٹنگ. یہ سائیکل جو ہے نا, یہ پورا سائیکل یہ ریپیٹ ہو رہا ہے ہمارے پاس یہاں پہ. لیٹس سے if I call this one cycle. ٹھیک ہے جی. یہ میرا ایک سائیکل ہے. تو اس طرح کا یہ ایک دوسرا سائیکل یہاں پہ, پھر تیسرا سائیکل اس کے بعد یہاں پہ, یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. مشینری تو چل رہی ہے نا, تو اٹ از گوئنگ ٹو ریپیٹ. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں ابھی ہم نے کہا جو لینئر ڈیمیج ہائپوتھیسس ہے دیٹ ٹیل اس کہ ہمارے پاس جو ہے ڈیمیج جو ہوگا, اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اس پورشن میں جو بیئرنگ کو ڈیمیج ہو رہا ہے پلس اس پورشن میں جو ڈیمیج ہو رہا ہے پلس اس پورشن میں جو ڈیمیج ہو رہا ہے, ہم ان سب کو جمع کرتے ہیں. تو the damage caused by the first instant یا the first level of load
प्लस द सेकंड लेवल ऑफ लोड प्लस द थर्ड लेवल ऑफ लोड, ये हमारा डी हो जाएगा डैमेज, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह अगर हम एक और काम करें कि इन तीनों फोर्स का हमने कोई इक्विवेलेंट लोड फाइंड आउट किया, तो वो इक्विवेलेंट लोड इस तरह रहेगा ना, जैसे एक इक्विवेलेंट लोड हमारे पास चल रहा है, मतलब इसमें कम होगा इसमें ज्यादा, हमने एक एवरेज या इक्विवेलेंट लोड मालूम कर लिया, तो वो इक्विवेलेंट लोड तो इस तरह होगा ना, एफ इक्विवेलेंट टू द पावर ए, ये एफ ई नहीं है, ये एफ इक्विवेलेंट है, एफ इक्विवेलेंट टू द पावर ए टाइम्स the first one, the second one and the third one, तो एक साइकिल में हमारे पास ये डैमेज होगा। तो क्या isn't this A equal to, या isn't this B equal to C? ये एक जितने नहीं होंगे, ये भी डैमेज है लेकिन छोटा छोटा डैमेज, या अगर हम इतना F इक्विवेलेंट लगाएं तो वो एक किस्म का डैमेज कॉज करेगा एक साइकिल में, which will be D. Agreed? Agreed? अच्छा जी, तो हम इन दोनों को हम इक्विवेलेंट रख लेते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जो है हम इनको मतलब लेट्स से B इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू C हम करें तो हमारे पास इक्विवेलेंट लोड ये निकल आता है F1 टू द पावर, ठीक है जी, जबरदस्त, ठीक है ना। इस F इक्विवेलेंट को एक तरफ ले जाएं तो दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है जी। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें, it is equal to sum of Fi over Fei to the power A raised to the power 1 over A, देखो ना, ठीक है जी। क्या Fi, what is Fi? Fi जो है ना, Fi, ठीक है जी, we will explain that. Fei क्या है? Fei खुदा शुक्र, Fe1, Fe2, Fe3. Now what is Fi? Fi is basically excuse me. अच्छा जी, what is Fi? Fi is the fraction, ठीक है जी। मैं वापस जाता हूं, देखें मैं सारे साइकिल की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं ये कहूं कि N1 डिवाइडेड